Hello friends, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी इकोनॉमी एंड पॉलिटी रिलेटेड बेसिक रु एडवांस लेवल रो क्वेश्चंस मु नेकी आसीची एही सीरीज रे। तो ये हला पार्ट नंबर 1 मैराथन वीडियो रहइबो। वीडियोटी कंप्लीट देखिया पई चेष्टा करंतु कारण क्वेश्चन सब मु बछा बछा नेकी आसीची जोटा कि एग्जाम रे आसीबार चांस बहुत परिमाण रे रहउची। तो चलंतु किछि देरी न करिकी स्टार्ट करिबा। आ ए वीडियो समस्त एग्जाम्स पई इंपोर्टेंट रहिबो। फर्स्ट क्वेश्चन, which constitutional body is regarded as the balancing wheel of fiscal federalism in India? क्वेश्चंस भल लगे ही लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे निज सांग मान सहित एवं चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर नियंतु एवं वीडियो रिगार्डिंग चैनल रिगार्डिंग जहाँ भी डाउट किंबा क्वेरीज अच्छी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके मते जणेबे। तार करेक्ट आंसर कौन हम? फाइनेंस कमिशन। फाइनेंस कमिशन is a constitutional body is regarded as the balancing wheel of fiscal federalism in India. ठीक अछि। Where is the headquarters of the World Bank located? तार करेक्ट आंसर कौन हम? Washington DC. Washington DC. Which of the following is an example of direct tax in India? ऑप्शन मध्यरु डायरेक्ट टैक्स कोटा? कस्टम्स ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तार करेक्ट आंसर हम कैपिटल गेन्स टैक्स। या अर्थ इनडायरेक्ट टैक्स कौन? जमती कस्टम्स ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जोटा कि वैल्यू एडेड टैक्स, भाट जोटा कि एटा सब होला इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक अछि। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए? तो करेक्ट आंसर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो सब बेसिक क्वेश्चंस ए वीडियो रे हमें कवर करिवा। बेसिक क्वेश्चंस रु धीरे धीरे हमें एडवांस पर्यंत जीवा। As per the Indian Constitution, the present retirement age of the High Court judges is? Correct answer will be 62 years. High Court judge 62 years. Which of the following banks acts as a banker to the government of India? Banker to the government of India. The correct answer habo gote hi अछि सेला RBI. The total number of high courts in India at present is? वर्तमान सुधा इंडिया रे केतेटा हाई कोर्ट अछि? The correct answer habo 25 टा अछि. Who is the ex officio chairperson of the National Institution of Transforming India? एडाला नीति आयोग जोटा कि तार चेयरपर्सन किए? तो करेक्ट आंसर हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक अछि। जेतले प्लानिंग कमिशन चलतिला सेतरे मध्ये चेयरपर्सन के रहउतले? प्राइम मिनिस्टर रहउतले। नीति आयोग रे मध्ये सेम। Which of the following has the original, exclusive and final authority to decide the disputes regarding the election of president and vice president? Which of the following has the original, exclusive and final authority to decide the disputes regarding the election of president and vice president? The correct answer कौन होगा? Supreme Court of India. Supreme Court of India. ठीक अछि। Next. What is the full form of acronym ECB, a bank of the European Union countries which have adopted the euro? ECB रो full form कौन? The correct answer हबो यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक अछि। इजी थिला एटा। नेक्स्ट देखिबा। In India, who is the chairman of the Interstate Council? Interstate Council रो chairman किए? Interstate Council. The correct answer हबो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मन रखिबे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Which constitutional functionary is known as the guardian of the public purse? गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स रिलेट करि परथुबे। करेक्ट आंसर गोटे ही हबो सीएजी। सीएजी ऑफ इंडिया। ठीक अछि। इन इंडिया द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस कमिशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर। गोटे ही आंसर हबो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक अछि। Allowances or salaries of judges of the Supreme Court determined by Parliament of India. Who is the custodian of the India's foreign exchange reserves? Custodian of the India's foreign exchange reserve. The correct answer is the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India. Who among the following heads the 6-member Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India? किए heads करंती?
6-member monetary policy committee of the Reserve Bank of India. The correct answer is RBI governor of RBI. In India, the Finance Commission is constituted by कहा द्वारा फाइनेंस कमिशन कन्स्टिट्यूटेड होइछि तो करेक्ट आंसर कोन होबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि ऑप्शन कोन दिला यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर होबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया constituted finance commission. What is the full form of SIDBI in banking terminology? SIDBI रो फुल फॉर्म कोन देखो ये बैंक रो मते गोटे क्वेश्चन आनिबार रीजन अछि रीजन एया बहुत लोन सैंक्शन करा जाए विभिन्न स्कीम्स पाई आ विभिन्न स्कीम गुडी को गवर्नमेंट रो इंप्लीमेंट करे एही सब बैंक जेमिति एमएसएमई डिपार्टमेंट पाई हो फार्मर्स डिपार्टमेंट माने फार्मर्स रिलेटेड हो जे कोनोसी स्कीम भी हो ठीक अछि तो सिडबी रो फुल फॉर्म कोन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हु हैज द पावर टू रिमूव द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का पाखे पावर अछि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ताकू रिमूव करिया पई तो करेक्ट आंसर हबो गवर्नर ऑफ द स्टेट ठीक अछि गवर्नर ऑफ द स्टेट ए जरा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मेंशन करा जाय तो सेति में गवर्नर ऑफ द स्टेट Which among the following is not a constitutional body in India? या तो कोटा constitutional body नुह मैं ऑलरेडी कहि सारछि constitutional body काहा को आजे तार करेक्ट आंसर कोन हबो तार करेक्ट आंसर हबो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन बट स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट फाइनेंस कमिशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ए सब वाला constitutional body किंतु इंफॉर्मेशन कमिशन नुह ठीक अछि The governor of a state holds office during the pleasure of governor of the state holds office during the pleasure of the president of India ठीक अछि whose birth anniversary is celebrated as National Statistics Day every year in India National Statistics Day प्रत्येक वर्ष पालन करा जाय केउ तारिख रे पालन करा जाय कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे केउ तारिख रे ऑब्जर्व करा जाय तो कहा बर्थ एनिवर्सरी को तो करेक्ट आंसर हबो पीसी महालानोबिस ठीक अछि नेक्स्ट which term in the preamble of the Indian Constitution implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state जोड़ा हम पई गर्वर कथा which term in the preamble of the Indian Constitution implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state the correct answer habo sovereign correct answer will be sovereign ठीक अछि next who has the authority to make advances out of the contingency fund of India to meet unforeseen expenditure who has the authority to make advances out of the contingency fund of India to meet unforeseen expenditure the correct answer habo president of India तांको पाखरे ही केवल अथॉरिटी अछि ठीक अछि next which bank acts as the lender of the last resort in India lender of the last resort in India गोटे ही से हला RBI as per the Indian Constitution the Parliament of India consists of the Council of States the House of People and the President of India तीनिटा कोन कोन Parliament of India consists of Council of State 1 House of People 2 थर्ड हला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीनटा को नेके हमर पार्लियामेंट गठित मन रहिला एटा इंपोर्टेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स हाउस ऑफ पीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया या भीतर कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पूर्व क्वेश्चन थिला कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुवा बोली जोटा कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन दिला हां कि नै तो एथरे थिला एथरे क्वेश्चन अछि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ताले कोटा तो करेक्ट आंसर हबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पूर्व क्वेश्चन रे ऑप्शन रे थिला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया या भीतर ताले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोटा नुह जान दबा एथरे जेंति नीति आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशन सेंट्रल विजिलेंस कमिशन ठीक अछि नेक्स्ट इन इंडिया द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट रो जजेस माने को की अपॉइंट करे तो करेक्ट आंसर हबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया या तो कोटा डायरेक्ट टैक्स करेक्ट आंसर हबो इनकम टैक्स
कस्टम ड्यूटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स ए सब इनडायरेक्ट टैक्स ठीक अच्छे क्लियर नेक्स्ट ए टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस निश्चित आसीबो जतले इकोनॉमी ऊपर क्वेश्चंस आसीबो ठीक अच्छे नेक्स्ट हु अपॉइंट्स द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया की अपॉइंट करे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया तो करेक्ट आंसर अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमेंबर दिस इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करा जाए linguistic minorities in India. Which of the following terms is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? Fraternity, Republic, Equality, Federalism. Preamble ले क्यों टर्म यूज करा जाई नाही तो करेक्ट आंसर हो फेडरलिज्म ठीक अच्छे इक्वालिटी अच्छी रिपब्लिक अच्छी फ्रेटर्निटी अच्छी बट फेडरलिज्म नहीं क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भीम रो फुल फॉर्म कौन भीम रो फुल फॉर्म कौन तो करेक्ट आंसर हो भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत इंटरफेस फॉर मनी ठीक अच्छे नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990 ये एस्टैब्लिश करथले इंटरस्टेट काउंसिल interstate council established by was established by president of India ठीक अच्छे in India the cash reserve ratio is decided by which of the following CRR कहा द्वारा डिसाइड करा जाए तो करेक्ट आंसर अब RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी द्वारा क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी KYC रो फुल फॉर्म कौन The correct answer is know your customer. Know your customer. Which part of the Indian Constitution is described as the Magna Carta of India? क्यों part को Magna Carta of India बोली कुआ जाए? The correct answer is part 3. Part 3. ठीक अच्छे. Next. If the CAG of India wishes to resign, he must address his resignation letter to the से कहा को रेजिग्नेशन लेटर देवे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग तो करेक्ट आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को से देवे ठीक अच्छे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को से देवे अच्छा बर्तमान कैग किए अच्छा जानी जदि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्स द पद्म अवार्ड्स इन इंडिया पद्म अवार्ड्स जणे ही दिए किए दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे Cash reserve ratio CRR is the minimum percentage of a bank's deposit to be held in the form of liquid cash रहो gold रहो special drawing rights रहो government securities रहो केमती हबो CRR is the minimum percentage of a bank's deposits to be held in the form of correct answer about liquid cash remember this liquid cash CRR is the minimum percentage of a bank's deposit to be held in the form of liquid cash who is the chairperson of GST council रो chairperson किए union finance minister होचंती chairperson of GST council ठीक अछि attorney general of India holds office during the pleasure of advocate general तो एबे पूर्व रूप जान ले attorney general of India holds office during the pleasure of obviously president of India what is the full form of CBB in banking terminology CBB रो full form कौन अपन को ATM रे CBB मेंशन था तो करेक्ट आंसर हो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू ठीक अछि नेक्स्ट Which among the following is not a part of the original constitution of India या भितर कोटा ओरिजिनल पार्ट नुह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो देखो गोटे गोटे वर्ड गोटे गोटे की पॉइंट को बार बार रिपीट करी कहूची देयर इज अ रीजन होचे या अननोइंगली आपन को माइंड रे सेटा सेट हे जिवो बार बार जतले सुनिबे मे बी इरिटेट भी लागुथबो बट सुनिले बार बार अननोइंगली आपन को माइंड रे सेट हे जिवो दैट्स द ओनली मोटिव Which among the following is not a part of original constitution of India? तो करेक्ट आंसर कौन हम फंडामेंटल ड्यूटीज कारण से परे आसिला ठीक अच्छे
परे आसिला केबे आसिला आगे क्वेश्चंस अछि हम से हिसाब रे क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली जीवा सिटीजनशिप आगु थिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आगु थिला फंडामेंटल राइट्स मध्ये थिला तो फंडामेंटल ड्यूटीज परे ऐड हला हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया ये फॉर्मुलेट्स करे फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया तो करेक्ट आंसर कोन हबो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस Where was the first municipal corporation set up in India? First municipal corporation set up in India. Correct answer was Madras. Correct answer will be Madras. Where was the fourth High Court established in India next to Kolkata, Bombay, Madras in 1866? Kolkata, then Bombay, then Madras. Tapore koti? Correct answer was Allahabad. Correct answer will be Allahabad. Mone rakhithibe not chronologically serially mone rakhithibe Kolkata, then Bombay, then Madras, then Allahabad. What is the full form of NBFC, a type of financial institution? NBFC ro full form kono? Correct answer habo non banking financial company. Non banking financial company. ठीक अछि. In India, who among the following has the authority to certify a bill as a money bill? का पाखरे authority अछि? तो correct answer habo Speaker of the Lok Sabha. Speaker of the Lok Sabha पाखरे authority अछि. Next. Who is the common chairman of zonal councils in India? Common chairman किए? Zonal council in India. तो करेक्ट आंसर कोन हबो यूनियन होम मिनिस्टर मने रखिबे जोनल काउंसिल सहित रिलेट करछंती कॉमन चेयरमैन होछंती यूनियन होम मिनिस्टर ठीक अछि द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज अपॉइंटेड बाय सॉरी इलेक्शन पड़ली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय का द्वारा तो करेक्ट आंसर हबो गवर्नर ऑफ द स्टेट रिमेंबर दिस गवर्नर ऑफ द स्टेट The salaries and allowances of the Speaker of Lok Sabha and Chairman of the Rajya Sabha, Chairman of the Rajya Sabha obviously Vice President, are drawn from कोठु तांकु दिया जाए Contingency Fund of India, Reserve Bank of India, Public Account of India, Consolidated Fund of India. बढ़िया क्वेश्चन. लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तांकर सैलरीज अलाउंसेस कोड मिले तो करेक्ट आंसर हबो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया consolidated fund of India. Remember this. Who conducts the election to the office of President of India? किए conduct करे President of India रो election? तो correct answer कौन होगा? Election Commission of India. Election Commission of India. ठीक अछि. What is the full form of AIIB? A multilateral development bank. AIIB यार बहुत लोन मध्य सैंक्शन करा जाए इंडिया गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न स्कीम्स पाई से इंपोर्टेंट रहिबो तो करेक्ट डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो ए बैंक सब हमर इंडियन इकोनॉमी सहित कनेक्टेड डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो से इंपोर्टेंट रहिबो तो करेक्ट आंसर हबो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक Treasury bills are money market instruments issued by which among the following in India? Treasury bills are money market instruments issued by which among the following in India? The correct answer is central government. Treasury bill, central government. Treasury bills, central government. Which of the following institutions regulates credit rating agencies in India? क्यों institution regulate करे credit rating agencies in India? The correct answer haba Securities and Exchange Board of India SEBI. ठीक अछि SEBI द्वारा. When did Indian Constitution come into force? When did Indian Constitution come into force? The correct answer haba 26th January 1950. 26th January 1950. Where is the headquarters of International Monetary Fund located? IMF रो हेडक्वार्टर कोडी अछि ठीक है पूर्व में वर्ल्ड बैंक रो देखले जोटा वाशिंगटन डीसी थिला एबे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो हेडक्वार्टर कोडी अछि सेम
Washington DC ठीक अछि next what does IBC one of the bankruptcy laws of India stand for IBC रो full form कोन correct answer हबो insolvency and bankruptcy code insolvency and bankruptcy code ठीक अछि who appoints the chairman and the other members of the Union Public Service Commission जणे सी हेले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी रो चेयरमैन और अदर मेंबर को अपॉइंट किए करे प्रेसिडेंट हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द करेक्ट आंसर हबो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक अछि हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किया अपॉइंट करे तो करेक्ट आंसर हबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया सी होचंदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि हु हैज द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा पाखे से अथॉरिटी अछि टू डिटरमाइन द रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर कोन हबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि अच्छा अथॉरिटी टू डिटरमाइन द रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थिंक ठीक हो ठीक अच्छे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो ना ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक हो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक आईडीए रो फुल फॉर्म कौन तो करेक्ट आंसर हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए राज्यसभा मेंबर आम जाने 6 वर्ष बोली लोकसभा 5 वर्ष बोली व्हाट डज नाबार्ड एन अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया स्टैंड्स फॉर नाबार्ड रो फुल फॉर्म कौन तो करेक्ट आंसर हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट who determines the strength of a high court of a state from time to time depending upon its workload who determines the strength of a high court of a state from time to time depending upon its workload तो करेक्ट आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बहुत कंफ्यूजन हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यार करेक्ट आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे नेक्स्ट who appoints the chairperson and the other members of the National Commission for Scheduled Tribes chairperson and other members of the National Commission for Scheduled Tribes एमानकर chairperson को appoint किए करे तो करेक्ट आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड केतिकी क्वेश्चंस हलानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीआरडी एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईबीआरडी करेक्ट आंसर हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑप्शन गुड़ी को बहुत कंफ्यूजिंग अच्छी प्रिसाइजली मन रखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन देखो गोटे जगह लिखा जाइए सॉरी मु कंस्ट्रक्शन पढ़ी रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली रिकंस्ट्रक्टिंग लिखा जाइए गोटे जगह रिस्ट्रक्चरिंग लिखा जाइए गोटे जगह रिकंस्ट्रक्शन लिखा जाइए बट यार करेक्ट आंसर हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ठीक अच्छे रिकंस्ट्रक्शन ठीक अच्छे IBRD reconstruction who among the following has the authority to establish a common high court for two or more states का पाखरे से authority अच्छी
गोटे हाईकोर्ट पाखे दीटा कि तीनटा स्टेट रो रेगुलेशन रहिबो तो करेक्ट आंसर हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छी नेक्स्ट व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा ऑलरेडी कहि सारली 5 वर्ष राज्यसभा 6 वर्ष who is the final who is the final interpreter of the Indian constitution and the laws enacted under it who is the final interpreter of the Indian constitution and the laws enacted under it ए जगह इंटरप्रिटर माने कौन तो करेक्ट आंसर कौन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु इज द फाइनल ओबियसली जहाँ भी ये कौन एक्चुअली इंटरप्रिटर माने होची जहाँ भी लॉ नुआ आसिला किंबा आर्टिकल अमेंडमेंट करागला पार्लियामेंट द्वारा सेटा लास्ट को सुप्रीम कोर्ट पाखक आसीबो भेरीफाई हेबा लगी जे सीए किछि रूल रेगुलेशन फॉलो करूची कि करूनी कि किछि भूल होउची कि भूल होनी ए सब डिसाइड करियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो सेति में ताको फाइनल इंटरप्रिटर बोली कहा जाए जे कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रांग रखिबारे हेल्प करे ठीक अछि माने फाइनली एग्जीक्यूशन जोटा हबो सेटा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही हबो नेक्स्ट व्हिच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया तो करेक्ट आंसर हबो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ठीक अछि बीएसई The ideas of liberty, equality, and fraternity in our preamble have been taken from the co-revolution निया जाइछि liberty, equality, fraternity. The correct answer was French Revolution. Who appoints the chairman and the members of a joint administrative tribunal? He appoint करे chairman and the other members of a joint administrative tribunal. The correct answer was President of India. President of India. ठीक अछि What is the expansion of acronym ADB, a regional development bank? ADB रो full form कोन? Most important. Correct answer हबो Asian Development Bank. Asian Development Bank. ए जारे देखंतु ऑप्शन कोन अछि? Asian Developing Bank लिखा अछि. तो Developing Bank, Asian Development Bank भितर precisely मन रखबे Asian Development Bank. What is the full form of Exim Bank? A financial institution in India. Most important ए बैंक रो. Export Import Bank ठीक अछि Export Import Bank of India Who appoints the Chief Information Commissioner of India की appoint करे Chief Information Commissioner of India the correct answer है President of India Which is India's first payment bank या तो कोटा इंडिया रो प्रथम पेमेंट बैंक तो correct answer है Airtel Payments Bank in India who administers the oath of secrecy to the Prime Minister and his Council of Ministers. बढ़िया क्वेश्चन तो फेवरेट सब एग्जाम रे आसीबार चांस मते बहुत अछि तो यार करेक्ट आंसर बा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमिशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कहा चेयरमैनशिप रे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमिशन रो माने सेटअप करा जाइथिला तो यार करेक्ट आंसर हबो काका कलेक्टर ठीक अछि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमिशन काका कलेक्टर Who is the heaviest coach? Who is the highest law officer in India? Highest law officer in India. The correct answer is Attorney General of India. Attorney General of India. तांको तले Solicitor General of India. ठीक अछि मने रखबे Attorney General of India. Clear? Next. The phrase procedure established by law. The phrase procedure established by law in the Indian Constitution is borrowed from कोट होना जाइए प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ तो करेक्ट आंसर हम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करा जाइए प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया रो प्रथम स्मॉल फाइनेंस बैंक कोटा तो करेक्ट आंसर हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कैपिटल
ठीक अच्छे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन या पूर्व आम यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स विषय जानले जे कि अपॉइंट करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को किए अपॉइंट करे तो करेक्ट आंसर हम गवर्नर ऑफ द स्टेट जो यूनियन कथा आसीबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जेतेबेले स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कथा आसीबो सेतेबेले गवर्नर ऑफ द स्टेट नेक्स्ट ए रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया सेबी स्टैंड्स फॉर सेबी रो फुल फॉर्म कोन ठीक है पूर्व आम जानिथिले रेगुलेटिंग काम करे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द सर्वोदय प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय सर्वोदय प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय का द्वारा ड्राफ्ट करा जायतिला तो करेक्ट आंसर हम जयप्रकाश नारायण ठीक अछि सर्वोदय प्लान एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO स्टैंड्स फॉर WTO रो फुल फॉर्म कोन रिलेट माने डायरेक्टली रिलेशन नाही माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो इंडियन इकोनॉमी सहित बट इनडायरेक्टली तो अछि तो करेक्ट आंसर कोन हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन who was the only president to be elected unopposed in independent India unopposedly किए माने क्यों प्रेसिडेंट इलेक्ट हेतिले जणे से होचंती नीलम संजीवा रेड्डी ये मध्य फेवरेट क्वेश्चंस एग्जाम मान करे इन इंडिया द वेंचर कैपिटल फंड VCF वेंचर कैपिटल फंड इज रेगुलेटेड बाय वेंचर कैपिटल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटिंग जिनस आसला माने मोस्टली सेबी ही करे आरबीआई भी करे बट ए जगह रे मने रखिबे सेबी रो काम कोटा आरबीआई रो काम कोटा हमें क्वेश्चंस देखुचे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करिकि माइंड रे रखिबे कोटा कहार काम द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ बढ़िया क्वेश्चन क्यों प्रोविजन अंडर रे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रो इंस्टीट्यूशन वर्क्स स्टार्ट हला तो करेक्ट आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 the institution of speaker and deputy speaker originated in India under the provision of government of India act of 1919 speaker deputy speaker 1919 government of India act who is the regulatory authority of merchant banking in India regulatory authority of merchant banking in India तो करेक्ट आंसर हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखो ये जगह भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी का पाखे अच्छी सेबी पाखे अच्छी द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL originated in which of the following countries जो ए कॉन्सेप्ट हम इंडिया भी एक्सेप्ट करिछि तो यार करेक्ट आंसर कोन होछि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एठू ही ओरिजिनेट हेछि ठीक अछि PIL which of the following articles of the Indian constitution guarantees equality before law जे भी आर्टिकल्स पढ़ापढ़ी करछंती तांकर फेवरेट आ तांकर फर्स्ट मने रहइबा जिंस होछि एटा इक्वालिटी बिफोर लॉ तो करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 14 which of the following institutions estimates the national income of India ये एस्टिमेट करे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्यों इंस्टीट्यूशन तो करेक्ट आंसर हो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस what is the full form of FDI in economics terminology FDI रो फुल फॉर्म कोन foreign direct investment in India housing finance companies are regulated by the Reserve Bank of India ए जगह सेबी ऑप्शन थिले सेबी कर देबेनी Reserve Bank of India housing finance companies which constitutional amendment act reduced the voting age from 21 years to 18 years in India बार एग्जाम रे देखिया को मिले क्वेश्चन तार करेक्ट आंसर कोन हबो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 ठीक अछि नेक्स्ट द गांधीयन प्लान वाज formulated by तो करेक्ट आंसर कोन हबो श्रीमान नारायण अग्रवाल या पूर्व को प्लान में पढ़ले सर्वोदय प्लान पढ़िथिले कहा द्वारा
जयप्रकाश नारायण द्वारा एवं गांधीन प्लान श्रीमान नारायण अग्रवाल क्लियर नेक्स्ट हाउ कैन वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री पर कैपिटा इनकम को आमे केमिति कैलकुलेट करू तो करेक्ट आंसर हम डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम डायरेक्टली मन रखिए नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन क्लियर नेक्स्ट The Constitution of India derives its ultimate authority from. The Constitution of India derives its ultimate authority from. The correct answer is the people of India. Mane rakhibe the people of India. Who among the following moved the historic objectives resolutions in the Constituent Assembly on 13 December 1946? Who among the following moved the historic objectives resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946? The correct answer was Jawaharlal Nehru. ठीक अछि Which among the following subjects was transferred from the state list to the concurrent list through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? 44 Constitutional Amendment Act 1978, 42 Constitutional Amendment Act 1976. तो को सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट को ट्रांसफर करा गला एजुकेशन को ठीक अछि मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन को स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट को ट्रांसफर करा गला What is the full form of MLA? समस्त जानिथिबे MLA रो फुल फॉर्म कोन ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द वोटर्स तो करेक्ट आंसर हबो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स NCF was constituted in 2004 National Commission on Farmers was constituted in 2004 under the chairmanship of kaha chairmanship रे तो करेक्ट आंसर हबो MS स्वामीनाथन NCF National Commission of Farmers was constituted in 2004 under the chairmanship of MS Swaminathan. RuPay is an Indian domestic card scheme conceived and launched by कहा द्वारा लॉन्च हितला RuPay कार्ड बहुत जनों को पाखरे थिबो RuPay NPCI National Payments Corporation of India Who among the following wrote the book Planned Economy for India किए लिखितले Planned Economy for India. The correct answer is M. Visvesvaraya. Planned Economy of India. Written by M. Visvesvaraya. Who was the first chairman of the Planning Commission in India? जने हिथिले सीएल जवाहरलाल नेहरू जे हमरो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम ऑलरेडी कहि सरछि नीति आयोग हो किबा प्लानिंग कमिशन हो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर If unemployment continues to be a long-term feature of a country, it is called. Unemployment जितले continues रहइबो long term पई then ताको हमें कोन कहबा गोटे country रो. The correct answer हबो chronic unemployment. Chronic unemployment. What is the full form of CRR in economics? ठीक है हम पूर्व हमें देखले cash reserve ratio CRR. At present, how many languages are there in the 8th schedule of the Indian Constitution? 15, 16, 22, 17. At present. ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 22ଟା ଅଛି ଆଉ କଣ ଏ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଜାଗାରେ ପଚାରି ଦିଏ 8 schedule ରେ ଆଗରୁ କେତେଟା ଥିଲା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଯାଏ ମନେ ରଖିବେ 14ଟା Under whose chairmanship the Commission on Center-State Relations was appointed in 1983? Under whose chairmanship the Commission on Center-State Relations was appointed in 1983? The correct answer is R.S. Sarkaria. R.S. Sarkaria. ठीक अछि. Next. In India, the first 5-year plan was launched in the year. केबे हेतिला 1951 रे. 1951 रे. ठीक अछि. 5 वर्ष ପାଇଁ next who designates an officer of the state government as the district election officer in consultation with the state government बढ़िया क्वेश्चन किए डेजिग्नेट करे
गोटे ऑफिसर को of the state government as the district election officer in the consultation with the state government. The correct answer is election commission of India. Election commission of India. How many times the preamble of the Indian constitution amended so far? How many times was the preamble of the Indian constitution amended so far? The correct answer is 1. ठीक अछि. In India, T-bills are short-term debt instrument issued by कहा द्वारा इशू हुए? टिके सम पूर्व कही ना ये जगह थिला ट्रेजरी बिल थिला किंतु ये जगह शॉर्ट फॉर्म रे लिखि देछि कोन टी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन कोन थिला कॉर्पोरेट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Which among the following is the first bank that introduced ATM in India? First bank कोडा जोटा कि ATM इशू कला इंडिया रे तो करेक्ट आंसर हो HSBC. अच्छा HSBC रो फुल फॉर्म कोन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे HSBC. अच्छा एपर्यंत जो माने वीडियोस देखुचंती कमेंट बॉक्स रे दया कमेंट करिवे जो सर मु एपर्यंत देखुछु बोली किछि नै मते खुशी लागिवो आउ किछि नै हमु थैंक यू जणेबी. What is the full form of EVM in the context of elections? EVM रो फुल फॉर्म कोन? The correct answer है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. क्वेश्चन एमिति भी आसे ईवीएम कोठी प्रथमे यूज करा जायतिला केउ जगह रे केउ इलेक्शन रे मने रखिबे. नेक्स्ट which of the following schedules of the Indian constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories? केउ schedule मेंशन करा जायछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories? Correct answer is fourth schedule. Fourth schedule. Who has the power to determine the conditions of service of the chairman and the other members of the Union Public Service Commission? आमे जानचे मेंबर एवं चेयरमैन को अपॉइंट किए करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जारे क्वेश्चन अछि हु हैज द पावर टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी रो. तो करेक्ट आंसर कोन हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेम अपॉइंट मध्य कंडीशंस मध्य क्लियर. नेक्स्ट Who conducts open market operations in India? किए कंडक्ट करे ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOS. तो करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. ठीक अछि. In which of the following places the Reserve Bank of India is headquartered? हेडक्वार्टर कोडी अछि RBI रो. तो करेक्ट आंसर है मुंबई मने रखिथिबे. What is the full form of NPA in banking terminology? NPA रो फुल फॉर्म कोन? तो फुल फॉर्म होछि नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो या जोटा कि बैंक रो लोन नेकी से लोन बैंक रिकवरी करि पारेनी ताको नॉन परफॉर्मिंग एसेट रे रखा जाय. नेक्स्ट हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन रो चेयरमैन के थिले? तो करेक्ट आंसर कोन हो? करेक्ट आंसर विल बी बीपी मंडल. हु? बीपी मंडल. सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन रो चेयरमैन थिले बीपी मंडल. फर्स्ट के थिले कहि सारिछि क्वेश्चन जाई सारिछि. नेक्स्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज ए होली ओन सब्सिडियरी ऑफ कहार होली ओन सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक अछि DICGC मने रखिबे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. हु पब्लिशेस ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स? ये पब्लिश करे ऑल इंडिया पब्लिशेस ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स माने को तो लेबर ब्यूरो. ठीक अछि लेबर ब्यूरो. Which schedule was added to the Indian Constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act? को schedule को add कराला 73rd Constitutional Amendment Act रे. करेक्ट आंसर है 11th schedule 73rd Constitutional Amendment Act. क्लियर. नेक्स्ट टू न्यूट्रालाइज देखो जो माने पॉलिटी रो गोटे अलग प्लेलिस्ट अछि थरे विजिट करनेबे पॉलिटी रो सेतरे इंपोर्टेंट पार्ट्स माने पार्ट्स रिलेटेड हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल्स रिलेटेड जते भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अछि ता रिलेटेड आउ अमेंडमेंट रिलेटेड वीडियोस पाइबे.
आम प्रेसिडेंट को विषय में जी जहाँ बेसिक जाना कथा तासे पाइबे निश्चित थे विजिट करने। To neutralize the negative impact of inflation, the Indian government provides dearless allowance to its employees. Dash a year. वर्षों के थर दिए। To neutralize the negative impact of inflation, the Indian government provides dearness allowance DA जोटा कि दिया जाए to its employees dash a year. तो यार करेक्ट आंसर हबो twice a year. Which article of the Indian Constitution guarantees the equality of opportunities in matters of public employment? सबु जगार इक्वालिटी देखा हबो सेटा को आर्टिकल मेंशन करा जायछि। तो यार करेक्ट आंसर हबो आर्टिकल 16। इक्वालिटी बिफोर लॉ टिके सम पूर्व आमे पढले आर्टिकल 14 रे मेंशन करा जायछि बट एई जगार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the equality of opportunities in matters of public employment article 16. Next, M.S. Swaminathan is a distinguished personality in which of the following fields? Agriculture, mountaineering, painting, मेडिसिन टिके सम पूर्व आमे फार्मर्स रिलेटेड देखिथिले कमिशन रो चेयरमैन किए थिले एम.एस. स्वामीनाथन। तो एतरो आमे जानि परिबा एग्रीकल्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज फॉर्मड बाय ब्रिक्स? क्यों बैंक फॉर्म हेछि ब्रिक्स द्वारा? तो करेक्ट आंसर हबो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ए क्वेश्चन आनिवार रीजन कोन? ब्रिक्स रे हम इंडिया अछि, ठीक अछि, ब्रिक्स रे हमर इंडिया अछि, सेतर मध्य लोन इंडिया आने न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक अछि। ब्रिक्स रो फुल फॉर्म कोन? बी रे ब्राजिल, आर रे रशिया, आई रे इंडिया, सी रे चाइना, एस रे साउथ अफ्रीका। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो चेयरमैन किए? तो करेक्ट आंसर हबो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, सम पूर्व थिला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो चेयरपर्सन किए? आमे जानथिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आमे स्टार्टिंग रो पढले तार के थिले? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिमिलरली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो होचंदी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। Who was the chairman of the second commission on center state relations set up by the government of India in April 2007? सेतबेले किए थिले? बढ़िया क्वेश्चन। Who was the chairman of the second commission on center state relations set up by the government of India in April 2007? तो करेक्ट आंसर हबो एम पुंछी। पुंछी मने रखिबे, बढ़िया क्वेश्चन एटा, ठीक अछि, इंपोर्टेंट। Which among the following has the power to regulate the government securities in India? का पाखरे से पावर अछि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेगुलेट करिया पई? तो करेक्ट आंसर हबो आरबीआई। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज, देखंतु ए जगह सेबी नाही बट मने रखंतु आरबीआई रो काम आ सेबी काम मध्य रे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुए तो भलो भाव रे मने रखिबे, डिफरेंशिएट करिक रखिबे, नोट करि परिबे जदि त आहुरी बढ़िया। आरबीआई लेफ्ट साइड रे रखिबे, राइट साइड रे सेबी रखिबे, या काम कोन ता काम कोन डिफरेंशिएट करदेबे, मने रखिबे, ताकू बेटर रहइबो। Which among the following countries has the longest written constitution in the world? से हला हम इंडिया रो। Which of the following is the private arm of World Bank? Private arm of World Bank कोटा ये तरू? तो करेक्ट आंसर हबो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। Which of the following articles of the Indian Constitution lays down provisions for the creation of all India services? क्यों आर्टिकल मेंशन करा जाय छै ऑल इंडिया सर्विसेज रिलेटेड? क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर हबो 312, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, ठीक अछि। ऑल इंडिया सर्विसेज 312। Who appoints the chairman of the Central Administrative Tribunal? He appoint करे chairman of the Central Administrative Tribunal? Obviously President of India. Who publishes the consumer price index numbers of agricultural laborers in India? या पूर्व आमे पढितले इंडस्ट्रियल लेबर रो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जोटा कि लेबर ब्यूरो करूथला। ए जारे क्वेश्चन अछि हु पब्लिशेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर कोन हबो? सेम, लेबर ब्यूरो। क्लियर? नेक्स्ट, who described the preamble of the Indian Constitution as the political horoscope of the Constitution? ये describe करे preamble of the Indian Constitution as the political horoscope of the Constitution? तो करेक्ट आंसर हबो के एम मुंशी। ये describe करथले के एम मुंशी।
पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के.एम. मुंशी। अच्छा ये जगह ऑप्शन अच्छी एन माधव राव, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर आंबेडकर एमान को नहीं क्वेश्चन अच्छी तो से किसी टेंशन हवा दरकार नहीं। इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉल्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर? या तो कोटा टर्शियरी सेक्टर अंडर ऐसे फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, टूरिज्म। तो करेक्ट आंसर विल बी टूरिज्म। क्लियर, टूरिज्म। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर इन? एक्जिम बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी अछि? तो करेक्ट आंसर हबो मुंबई। करेक्ट आंसर हबो मुंबई। ठीक अछि। आरबीआई रो मध्ये मुंबई, एक्जिम बैंक रो मध्ये मुंबई, एसबीआई रो मध्ये मुंबई। डब्ल्यूपीआई रो फुल फॉर्म कोन? होलसेल प्राइस इंडेक्स। In India, who releases the periodic labor force survey? Periodic labor force survey किए रिलीज करे? करेक्ट आंसर हबो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट, who has the authority to authorize non-bank entities to set up white label ATMs? का पाखरे से अथॉरिटी अछि टू ऑथराइज non-bank entities to set up white label ATMs? तार करेक्ट आंसर हबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। माउथर कहि रहउछि आरबीआई सेबी रो काम डिफरेंस फाइनेंस कमिशन रो भी इंक्लूड कर देले आहुरी बढ़िया हबो। समस्त को डिफरेंशिएट करिकि तांकर काम सब कैरेक्टराइज सब लिखि देबे, बेटर रहइबो टू रिमेंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एनुअली? किए रिलीज करे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? तो करेक्ट आंसर हबो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ठीक अछि, UNCTAD। The concept of fundamental rights in the Indian Constitution is borrowed from? Fundamental right quote होना जाइछि। तो करेक्ट आंसर है USA। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of? को वर्ष को पिलांकु दबा पई सर्व शिक्षा अभियान गोटे सिग्निफिकेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा जाइतला। तो करेक्ट आंसर हबो 6 वर्ष रु 14 वर्ष जाए। नेक्स्ट, What is the full form of CPI in economics? CPI रो फुल फॉर्म कोन? ठीक संपूर्ण WPI रो जानले जोटा होलसेल प्राइस इंडेक्स। सिमिलरली CPI रो फुल फॉर्म कोन? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक अछि। नेक्स्ट, Who among the following has the authority to create a joint state public service commission for 2 or more states? दीटा किबा ताठो अधिक स्टेट्स रो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन तैयारी करिया पे का पाखरे अथॉरिटी अछि? करेक्ट आंसर हो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली जेंति या पाखरे अथॉरिटी अछि जेंति कि गोटे स्टेट रो माने गोटे हाई कोर्ट जेंति 3-4टा स्टेट रो को रेगुलेट करि परिबो। सिमिलरली क्लियर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पाखरे सेही पावर अछि, अथॉरिटी अछि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स refers to buying and selling government securities by the Reserve Bank of India? ठीक है, संपूर्ण क्वेश्चन डिफरेंट थिला। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ठीक है, संपूर्ण लैंग्वेज अलगा थिला। जोटार ऑप्शन थिला आरबीआई, क्वेश्चन थिला OMOS लिखा जाइतला, ओपन मार्केट ऑपरेशन मन थिबो निश्चित। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? एनईएफटी इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, एनईएफटी रो फुल फॉर्म कोन? तो करेक्ट आंसर कोन हो? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन इन इंडिया? पंचायत इलेक्शन पे मिनिमम एज केते दरकार? करेक्ट आंसर हो 21 वर्ष दरकार। ठीक अछि, 21 वर्ष। प्रेसिडेंट पे 35 वर्ष दरकार। ठीक अछि। नेक्स्ट, आउ एमपी पे 30 वर्ष दरकार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा रिकमेंडेशन रे, क्यों कमिशन रे रिकमेंडेशन रे सेटअप करा जाइतला? करेक्ट आंसर होची हिल्टन यंग कमिशन, हिल्टन यंग कमिशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमिशन। ठीक अछि। तो जगह भावुवे बैमिंगटन स्मिथ कमिशन, मैन्सफील्ड कमिशन, साइमन कमिशन, ए सब नहीं क्वेश्चन अच्छी। साइमन कमिशन को लेकिन नहीं, बट बाकी दुटा को लेकिन अच्छी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया क्या कह जाए? तो करेक्ट आंसर हम वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रेकमेंडेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया? FIT, फिट, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया क्यों कमिटी रो रिकमेंडेशन ने करा जितला?
तो करेक्ट आंसर हम उर्जित पटेल कमिटी। उर्जित पटेल कमिटी ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे देखिया को मिले। What are the three words added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? 1976 42nd Constitutional Amendment Act रे केउ तीनटा वर्ड को इंसर्ट करा जाइतला तो करेक्ट आंसर हो यार सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी कंफ्यूज हेबेनी ऑप्शन एमती आसीबो कंफ्यूजिंग करिया पई बट भलसे मने रखिबे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ठीक अछि। The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India consists of how many members? टिके सम पूर्वरु सेही मेंबर माननकु हेड किए करे गवर्नर ऑफ आरबीआई बोली हमें जानिथिले ऑलरेडी क्वेश्चन आसी केतेटा हबो 6। What is the full form of RTGS in banking terminology? RTGS रो फुल फॉर्म कोन? करेक्ट आंसर हबो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। Who has the authority to reserve certain types of bills passed by the state legislature for the consideration of the President of India? का पाखरे अथॉरिटी अछि टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हबो कोन? गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑब्वियसली। नेक्स्ट, हु फिक्सेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन इंडिया? किए फिक्स करे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर हबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक अछि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऑफ इंडिया इन इंडिया। करेक्ट आंसर हबो Reserve Bank of India. What is the full form of IMPS in banking terminology? IMPS रो full form कोन? Immediate payment service. Immediate payment service. Immediate payment service. ठीक अछि? Immediate payment service. Which among the following states has a bicameral legislature? Bicameral legislature को स्टेट रे अछि? यूपी रे। यूपी रे अछि। हम ओडिसा ला यूनिकैमरल गोटे अछि। असेंबली लेजिस्लेचर असेंबली काउंसिल दीटा अलगा विधान परिषद विधान जोटा कि हम ओडिसा रे नाही विधान परिषद अछि कोठे काउंसिल यूपी रे ठीक अछि। Who among the following appoints the chairperson and the other members of the National Commission of Scheduled Caste? Who among the following appoints the chairperson and the other members of the National Commission for Scheduled Caste? या पूर्व गोटे क्वेश्चन आसला मने थिबो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ए यार क्वेश्चन अछि शेड्यूल्ड कास्ट। तो करेक्ट आंसर कोन हबो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स रो मध्ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट व्हाइट लेबल एटीएम? इंडिया प्रथम व्हाइट लेबल एटीएम कोटा? तो करेक्ट आंसर कोन हबो? इंडिकैश। कोन? इंडिकैश मन रखिया को इजी रहबो इंडिकैश। नेक्स्ट, which one of the following parliamentary committee has no representation from Rajya Sabha? Which one of the following parliamentary committees has no representation from Rajya Sabha? Correct answer habo estimates committee. कोन? Estimates committee. Who among the following has the sole right to issue bank notes in India? का पाखरे से राइट अछि बैंक नोट्स इशू करियार इंडिया रे? तो करेक्ट आंसर हबो आरबीआई। The extended fund facility is a lending facility of kahar? Extended fund facility is a lending facility of kahar? तो करेक्ट आंसर हबो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। Extended fund facility is a lending facility of IMF. Cantonment board functions under the administrative control of Cantonment board कहाँ अंडर काम करे? तो करेक्ट आंसर हबो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बढ़िया क्वेश्चन एटा। नेक्स्ट, व्हिच सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC यार टिके संपूर्ण या पर क्वेश्चंस थिला इंश्योर्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अप टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ the deposit insurance and credit guarantee corporation कार सब्सिडियरी टिके संपूर्ण क्वेश्चन देला एतरे पचाजी मैक्सिमम अमाउंट केते? तो करेक्ट आंसर हबो 5 lakhs. A bill introduced by any member of parliament other than a minister
इज नोन एज ताकू कौन कुआ जीवो गोटे पार्लियामेंट रो मेंबर से जदि गोटे बिल इंट्रोड्यूस कला अदर देन ए मिनिस्टर ताकू को बिल कुआ जीवो प्राइवेट बिल कि पब्लिक बिल कौन कुआ जीवो प्राइवेट बिल कुआ जीवो ठीक अछि प्राइवेट बिल Which of the following sectors has the highest percentage of working population in India? को सेक्टर रे अधिक पॉपुलेशन काम करछंती प्राइमरी सेक्टर obviously जेतु प्राइमरी सेक्टर रे हमर एग्रीकल्चर आसी जाउची Who appoints the chairman of the state administrative tribunal in India? नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रे तो हमर प्रेसिडेंट हायर करंती माने अपॉइंट करंती तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया तो हेतरे किए करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेम ठीक अछि इजार ऑप्शन गवर्नर ऑफ द स्टेट भी थिबो हां अछि कंफ्यूज हेबे नै Who has the authority to appoint लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त इन ए स्टेट कि का बाकरे अथॉरिटी अछि टू अपॉइंट लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त इन द स्टेट तो करेक्ट आंसर हो गवर्नर ऑफ द स्टेट ठीक अछि गवर्नर ऑफ द स्टेट लोकायुक्त उपलोकायुक्त Who is the ex officio chairman of the राज्य सभा ऑफ इंडिया किए करेक्ट आंसर हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही तो बसंती वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट Who discharges its statutory obligation of being banker to government of India? He discharges करे its statutory obligation of being banker to government of India. The correct answer of Reserve Bank of India. Deposit insurance premium paid to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC आकु ने कि 3 नंबर क्वेश्चन ये is borne entirely by the insured bank. कौन insured bank ठीक अछि डिपोजिट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू द डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज बोर्न एंटायरली बाय द इंश्योर्ड बैंक ठीक अछि क्लियर जोटा कि हमें कहि परबा फॉरेन बैंक जोटा कि इंडिया रे रेगुलेट माने चालुची ठीक अछि नेक्स्ट इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फिट इन द ईयर को वर्ष टिके संपूर्ण क्वेश्चन जाई सरची फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन द ईयर 2016 When did the Supreme Court of India come into existence? केबे आसिला existence को Supreme Court of India तो करेक्ट आंसर हो 1950 1950 रे Supreme Court of India आसिला आगु क्वेश्चन अछि हाई कोर्ट केबे आसिला छाड़ो Who among the following in the Supreme Commander of the Indian Armed Forces जने President of India ठीक अछि Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the Contingency Fund of India Contingency Fund of India या रिगार्डिंग को आर्टिकल मेंशन करा जायछि तो यार करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 267 एटा इंपोर्टेंट रहबो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 ठीक अछि नेक्स्ट व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो 5 वर्ष under which of the following articles of the Indian Constitution right to equality is granted right to equality कोथरे मेंशन करा जायछि 14 रु 18 when was the last fundamental duty added to the Indian Constitution last fundamental duty केबे ऐड कराला केउ वर्ष तो करेक्ट आंसर हो 2002 रे National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD is wholly owned by NABARD गोटे क्वेश्चन थिला NABARD रो फुल फॉर्म ए जारे क्वेश्चन अछि NABARD wholly owned by Government of India At present how many schedules are there in the Indian Constitution वर्तमान सुधा केतेटा अछि 12टा अछि The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights in a multilateral treaty adopted by the United Nations General Assembly in the year The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is a multilateral treaty adopted by the United Nations General Assembly in the year. The correct answer was 1966. 1966. 1866 रे हमरो फेमिन हेतिला फामिन नंग दुर्भिक्ष जोटा कुआ जाय Who among the following describe the directive principle of state policy as a novel feature of the Constitution of India? ये describe करथिले DPSP होची novel feature of Constitution of India. तो करेक्ट आंसर हबो B.R. Ambedkar. Who is the ex officio chairman of Niti Aayog?
टीएसएम पूर्व क्वेश्चन थिला नीति आयोग को एलाबोरेट माने डिस्क्राइब करके लिखा जायतिला डिस्क्राइब इन द सेंस फुल फॉर्म रे लिखा जायतिला ए जाय रे केवल नीति आयोग लिखा जायछि तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के नीति आयोग रो ऑलरेडी कहि जायछि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज आल्सो नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स केउ एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोली कुआ जाय तो करेक्ट आंसर हबो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 Who among the following is the first Indian origin Prime Minister of United Kingdom? ये क्वेश्चन बर्तमान नेक्स्ट 100 वर्ष पर्यंत पिला पढ़िबे 100 कोन 200 वर्ष पर्यंत जेतु फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हिचंती किए ऋषि सोनक Who was the first chief election commissioner of independent India? Chief election commissioner of independent India. The correct answer was Sukumar Sen. Which of the following articles of the Indian Constitution deal with the parliamentary system of government at the center? को आर्टिकल मेंशन करा जायछि with the parliamentary system of government at the center? Parliamentary system चलिबो सेंटर रे तो करेक्ट आंसर हबो आर्टिकल 74 and 75. Who among the following is the guardian of the rights and the privileges of the members of Lok Sabha? का बखरे से अथॉरिटी अच्छी से पावर अच्छी टू गार्ड ऑफ द राइट्स एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा तो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली स्पीकर ऑफ द लोक सभा व्हेन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स इन इंडिया केबे हितला मु कहि देइतली बोधे सेते बेले 1989 केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट बोली सेते क्वेश्चन थिला 61st अमेंडमेंट एक्ट बोली मु कहि दिली नेक्स्ट Who was the president of the Indian National Congress at the time of independence of India? सेतेबेले प्रेसिडेंट किए थिले जेतेले इंडिया इंडिपेंडेंट हला तो करेक्ट आंसर हबो जेबी कृपलानी आईएनसी रो प्रेसिडेंट थिले Who among the following takes part in election of the president of India? Who among the following takes part in the election of the president of India? किए पार्टिसिपेट करे बढ़िया क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम कौन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट विधान परिषद नुह नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नुह नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी नुह किंतु लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स रो मेंबर माने पार्टिसिपेट करंती ठीक अछि हाउ मेनी लोकसभा जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड टिल नवंबर 2022 केतेटा हे सारिछि लोकसभा जनरल इलेक्शंस नवंबर 2022 सुधा तो करेक्ट आंसर हबो 17 थरो केते थरो 17 थरो लोकसभा जनरल इलेक्शन ठीक अछि लोकसभा इलेक्शन The term socialist was added to the preamble of the Indian Constitution through which constitutional amendment act? Socialist word को insert करा गला preamble of the Indian Constitution रे through which constitutional amendment act? तो correct answer हबो 42nd Constitutional Amendment Act 1976 ठीक अछि next where is the headquarter of National Human Rights Commission of India situated? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो हेडक्वार्टर कोडी अछि न्यू दिल्ली रे अछि रिमेंबर दिस तो ये थिला अराउंड 200 क्वेश्चंस मैराथन वीडियो रो नेक्स्ट वीडियो रे आउ 200 क्वेश्चंस नै के आसीबी जदी क्वेश्चंस भल लागिथिबो कमेंट बॉक्स रे कमेंट निश्चित करिवे वीडियो केमती लागला ता मध्ये कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि मते जणेबे आ ए वीडियो समस्त एग्जाम्स पई इंपोर्टेंट रहइबो बछा बछा क्वेश्चंस अछि आ भलो क्वेश्चंस अछि ठीक अछि वीडियो टी कंप्लीट देखि दिबारु धन्यवाद।